control. पहला कर रहा under control. पूरी बिल्डिंग में शोर. पहला कर रहा under control. इन सबको रहना है मेरे close. लाखों में बिके मेरे pose. I'm on a show. Hey, hello, what's up? Hey. Hope I am visible and I'm not blurry. Yes. Hi, am I audible, right? Yes. By the way, there are like 3 good news and 1 bad news. पहले वो दे लेते हैं. Today क्या करने वाले हैं? Waiting for a visa by बाबा साहेब अम्बेडकर, ये पढ़ने वाले हैं. But before 3 good news and 1 bad news. 3 good news में पहला good news है ये, this, right? This is a chair I have like bought after 4 years. इसके पहले का चेयर का हालत बहुत ख़राब था. मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देंगे इसका पहले का चेयर का हालत के बारे में. सेकेंड गुड न्यूज़, आई बॉट दिस वॉच फॉर माई सेल्फ, राइट. या थर्ड गुड न्यूज़, ये माइक मेरा जो लाइक 10 साल से है राइट नाउ आई थिंक I can use it for streaming. That's great almost. And bad news, yeah, this is the bad news. Yes, I did not do it on purpose. I had to do it because of a challenge. So that's that. And हम बैठे हुए हैं मेरे डिनर के साथ. Yes, 3 eggs and Maggie. आज को हम लोग क्या करने वाले हैं? आज को हम लोग करने वाले हैं रीडिंग करने के पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. कौन बाबा साहेब हैं, कौन बाबा साहेब थे. आई मीन बेसिकली इफ़ यू वांट टू नो हु वाज बाबा साहेब, ही वाज known as the father of the Indian Constitution. This is Baba Saheb, if you don't know. He was an Indian jurist, economist, social reformer, and a political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constituent Assembly debates. Served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru and inspired the Dalit Buddhist movement after renouncing Hinduism. I mean, we know that, right? The time when he like tore the what was that known Manusmriti, and he turned to Buddhism, and that was the largest event of religious conversion, right? I hope you guys know it. If you know about Baba Saheb, it's like the one of the first thing you know about him. I mean, he was also a big person who talked about Dalit rights, reservation, and I think he was the person who first was talking about a different like place of vote or different voting system for the Dalit population, and that was not there, I guess. But also he did many things. He was the person. He is one of the person. एक second, हम तुमको दिखाते हैं what I'm talking about. Yeah. I don't remember, and right now I am not finding it. But somewhere in the world there are like a list of somewhere in the world there are like a list of people who are very influential and very learned persons, and there is a like place in which he is there in the list, right? You can understand he is the father of the Indian Constitution. I mean, what's this book about? Waiting for a Visa is an autobiographical document written by B.R. Ambekar during the period of 35 and 36. The manuscript was published as a booklet posthumously on March 19, 1990. उनका डेथ के बाद ये बुक रिलीज़ हुआ था
हुआ था 19 मार्च को बाय द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी. ओके, ग्रेट ग्रेट या pretty much. थोड़ा खा. By the way, great views are coming, right? 4 views, for fuck's sake, bro. For fuck's sake. थोड़ा सा देख लो, ठीक है? थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में सुन लेते हैं यूट्यूब पे. उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. विमो भी था क्या? ओके, दैट्स ग्रेट. माई गॉव इंडिया 3 साल पहले देख लेते इधर से. आई थिंक इट वुड बी अ गुड क्रेडिबल सोर्स, राइट? So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. And if I, therefore, from this place, support Dr. Jaikar's amendment, it is because I want all of us to realize that whether we are right or wrong, whether the position that we take is consonance with our legal rights, whether that accords with the statement of May 16th or December 16th, leave all that aside.
This is too big a question to be reduced to the position of mere legality. It is not a legal question. I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. That is my appeal. In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised, which struck me so well that I took the trouble of taking them down on a note paper. The one question was, it was asked, I think, by my friend, the Prime Minister of Bihar, who spoke yesterday in this assembly. He said, how can this resolution prevent the League from coming into the Constituent Assembly? Today, my friend Dr. Shyam Prasad Mukherjee asked another question. Is this resolution inconsistent with the cabinet mission's proposal? Now, sir, I think they were very important questions. And they, I think, ought to be answered. And answered categorically. I do maintain that this resolution, whether it is intended to bring about the result or not, whether it is the result of cold calculation, or whether it is a mere matter of accident, is bound to have the result of keeping the Muslim League out. And I'll substantiate what I said. Sir, I invite your attention to paragraph 3 in the resolution, which I think is very significant and very important. Paragraph 3 envisages the future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution, but I take it that it is a sort of, after this resolution is passed, it will act as a sort of a directive to the Constituent Assembly to frame the Constitution in terms of paragraph 3 of the resolution. What does paragraph 3 speak of? Paragraph 3 says that in this country there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. These autonomous units will have full powers. They will have also residuary powers. At the top and over the provincial units, there will be a union government having certain subjects for legislation, for execution, and for administration. Sir, as I read this part of the resolution, I do not find any reference to the idea of grouping an intermediary structure between the union on the one hand and the provinces on the other. Now, reading this paragraph in the light of the cabinet mission's statement, or reading it even in the light of the resolution passed by the Congress at its Vardha session, I must confess that I am a great deal surprised at the absence of any reference
to the idea of the grouping of the provinces. So far as I am personally concerned, I do not like the idea of grouping. I like a strong, united center, much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. But sir, these opinions, these wishes have no bearing on the situation at all. We have traveled a long road. The Congress party, for the reasons best known to itself, consented, if I may use the expression, to the dismantling of a strong center which had grown into this country as a result of 150 years of administration, and which I must say was to me a matter of great admiration and respect. Nine minutes into the video, so basically I tried to show you ki what about Ambedkar ji, but as I found the video, this video was Ambedkar ji's speech in 1946, December 17th, in the Constituent Assembly about the union territories, the states, and how the decentralization of power will be happening and stuffs like that, right? So it's not about Ambedkar ji, it's a speech by Ambedkar ji, so I let it play for so long. I mean, I did not think that I would get like a actual speech of him, but that's great, by the way. But okay, let's start reading, right? ये कंप्लीट कर लेते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, चलो. But having given up that position, having said that we do not want a strong center, and having accepted that there must be or should be an intermediate polity, a sub-federation between the union government and the provinces, I like to know why there is no reference in paragraph 3 to the idea of grouping. I quite understand that the Congress party, the Muslim League, and His Majesty's government is not ad idem on the interpretation of that particular idea about grouping. But I always thought, and I will be prepared to stand corrected if it's shown that I am wrong, that at least it was agreed by the Congress party that is the provinces who are to be within the different groups consent to form a union or a sub-federation, the Congress would have no objection to that proposal. I believe I am correct in interpreting the mind of the Congress party. So the question that I ask is this: why did not the mover of this resolution make reference to the idea of having a union of the provinces or a group of provinces on the terms on which he and his party was prepared to accept? Why is the idea of union completely effaced from this resolution? I find no answer. Okay, that's it. That's it. We are done here. And let's start reading. Yeah? Let's do it.
I just had a ice cream and my voice is fucking cracking. Waiting for a visa. Foreigners, of course, know of the existence of untouchability, but not being next door to it, so they say, so to say, they are unable to realize how oppressive it is in its actuality. It is different for them to understand how it is possible for a few untouchables to live on the edge of a village consisting of a large number of Hindus. Go through the village daily to free it from the most disagreeable of its filth and to carry the errands of the sundry, collect food at the doors of the Hindus, buy spices and oils at the shops of the Hindus from a distance, regard the village in every way as their home, and yet never touch or be touched by anybody belonging to the village. Again, you need to understand here that Ambedkar ji is talking about the time when we had colonial rule. So he's saying foreigners did knew that untouchability existed in India, and when he says foreigner here, he means the East India Company, but not being next door to it, so to say, they are unable to realize how oppressive it is. But jab, when we are talking about those East India Company people, they were living in the cities, they were living in the capitals, right, to control places, but they were not living in the rural areas, so to say. They were not living next door as the people who were living on the edges of the villages. मतलब विलेज का कोना में जो लोग जीते हैं उन लोग के साथ तो अंग्रेजों नहीं रहते थे, तो उन लोग को क्या फेस करना पड़ता था अंग्रेजों को कोई आइडिया नहीं था. मतलब कितना ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर था अनटचेबिलिटी, उसका कोई आइडिया अंग्रेजों को नहीं था. It is difficult for them to understand how is it possible for few untouchables to live on the edge of the village. मतलब वो लोग को ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कैसे कुछ अनटचेबल्स विलेज का कोना पे रह सकता है, सारे सारे साफ सफाई कर सकता है, अपने पूरे जीवन जापन कर सकता है, साफ सफाई के लिए पैसा मांग सकता है, एंड उसी अपर कास्ट हिंदूज के घर से चीज़ें खरीद सकता है, दुकान से चीज़ें खरीद सकता है, एंड स्टिल could regard the village as their home, but nobody will touch, or they cannot touch nobody, or they will be punished. ऐसे तरीके से भी कैसे वो लोग रहता था ये अंग्रेज़ों को पता होना काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज दे वर नॉट लिविंग नेक्स्ट डोर टू इट. The problem is how best to give an idea of the way the untouchables are treated by the caste Hindus. When he says caste Hindus, he mean upper caste Hindus, right? Like the general people. नहीं general मतलब I'm not talking about general people, I'm talking about general caste people, right? Yeah. मतलब क्या बोल रहे हैं? The problem is how to give an idea of the way. तो कैसे आइडिया हम लोग दे सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को या अंग्रेज़ों को कि अनटचेबल्स लोग, यानी कि जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, वो लोग को क्या फेस करना पड़ता है विथ द अपर क्लास और द कास्ट हिंदूज. A general description or a record of cases of the treatment accorded to them are the two methods by which this purpose could be achieved. A treatment accorded A general description or a record of cases of the treatment accorded to them, मतलब एक जनरल
डिस्क्रिप्शन या कुछ केसेस का एग्जांपल्स of how lower caste people are treated by the caste Hindus. दो मेथड से दिखाया जा सकता है, दो मेथड से ये पर्पस अचीव किया जा सकता है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. आई हैव फेल्ट दैट द लैटर वुड बी मोर इफेक्टिव दैन द फॉर्मर. तो दो मेथड पे जो पहला मेथड है उसमें सेकंड मेथड ज़्यादा का लाइक जिसको बंगाली में कार्यकरी बोलते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है पहले वाले मेथड से. In choosing these illustrations, I have drawn partly. In choosing these illustrations, I have drawn partly upon my experience and partly upon the experience of others. तो ये illustrations बनाने के टाइम अंबेडकर जी अपने कुछ एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस एंड अपने साथियों का एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये इलस्ट्रेशन बनाया. आई एम बिगिनिंग sorry I begin with the events that have happened to me in my own life. Okay, so this book is about the method, okay, in which he will describe the things that he has faced in his own life to describe how oppressive the structure was. So he starts here by saying, I begin with the events that have happened me in my own life. One, मतलब पहले chapter. Our family came originally from Dapoli Taluka, Dapoli Taluka of the Ratnagiri district of Bombay Presidency. Our family came originally from Dapoli Taluka of the Ratnagiri district of Bombay Presidency. He's saying where his family belonged from. He belonged from रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का दापोली तकोला तालुका बोल के एक एरिया से बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का. फ्रॉम द वेरी commencement of the rule of the East India Company, my forefathers had left their hereditary occupation for service in the army of the company. Okay. From the very commencement of the rule of the East India Company, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी घुसने के साथ ही साथ, my forefathers had left their hereditary occupation for the service in the army. इनका forefathers यानी कि उनका जो previous generation है, अपने जो hereditary jobs है, जो भी साफ सफाई का काम हो सकता है या फार्मिंग का काम हो सकता है, जो भी लोग करते थे वो छोड़ के मिलिट्री पे ज्वाइन कर दिए, बिकॉज वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा था एंड जो सोशल इज्जत भी ज़्यादा मिलता था बेसिकली. My father also followed the family tradition and sought service in the army. उनका पिताजी भी फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करके आर्मी में ज्वाइन होने का कोशिश किए. He rose to the rank of an officer and was a subedar when he retired. He rose to the rank of an officer and was a subedar when he retired. So वो एक ऑफिसर रैंक तक पहुँचे एंड जब वो रिटायर कर रहे थे वो सूबेदार पोस्ट पे थे. On his retirement, my father took the family to Dapoli with a view to settling down there. जब इनके पिताजी रिटायर कर गए तब इनका फैमिली को लेके गया दपोली में जहाँ पर वो लोग सेटल डाउन करेंगे. But for some reasons my father changed his mind. मतलब एविडेंट है कि कुछ रीज़न के कारण से उनका पिताजी अपने मत चेंज किए. The family left Dapoli for Satara, where we lived till 1904. फैमिली दपोली छोड़ के सतारा की तरफ बढ़ गया एंड उनका फादर दपोली पे ही रह गया. The first incident which I am recording as well as I can remember occurred in about 1901 when we were at Satara.
Oh, sorry, I misunderstood here a little bit. उनका फैमिली दपोली से सतारा में निकल गया एंड 1904 तक सतारा पे रहा बेसिकली, राइट? एंड 1901 में एक इंसिडेंट सतारा में जब था वो लोग, बाबा साहेब को एक याद आते हैं एंड उस इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं. माई मदर वॉज डेड देन. उनका माता जी का मृत्यु हो चुकी थी पहले ही. माई फादर वॉज अवे ऑन सर्विस एज अ कैशियर एट अ प्लेस कॉल्ड कोरेगांव इन खातव तालुका. कोरेगांव बोल के एक जगह में उनका फादर कैशियर का काम करते थे सतारा डिस्ट्रिक्ट पे ही. Where the government of Bombay had started the work of excavating a tank for giving employment to the famine-stricken people who were dying by thousands. The government of Bombay had started a work of excavating a tank for giving people employment to the famine-stricken region who were dying by thousands. जो फैमिन, वही जगह पे एक जगह पे फैमिन हुआ था एंड वही जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे रही थी सो दैट दे हैव द रिसोर्सेज टू बाय देमसेल्व्स फूड बेसिकली दैट. एंड क्या क्या एम्प्लॉयमेंट दे रही थी? एक्सकावेटिंग अ टैंक. कोई टैंक एक्सकावेट करने का एम्प्लॉयमेंट दे रही थी गवर्नमेंट टू द फैमिन स्ट्रिकन पीपल हु आर डाइंग बाई थाउजेंड्स, जो हज़ारों की तादाद पे मर रहे थे. When my father went to Koregaon, he left me. My brother was older than myself, and two of my eldest sister. And two sons of my eldest sister who was dead, in charge of my aunt who was, and some kind neighbor. Sorry, I'm just fucking blabbering, right? When my father went to Koregaon, he left me, my brother who was older than myself, and टू सन्स ऑफ माई ओल्डेस्ट सिस्टर वॉज डेड. मतलब उनका फादर जब निकल गए तो कौन कौन था? बाबा साहेब थे, बाबा साहेब का दादा था, ब्रदर था, दादा मतलब क्या बोलते उसको हिंदी में, भैया था. अ, उनका दीदी का एल्डेस्ट सिस्टर का दो बच्चा भी था एंड उनका एल्डेस्ट सिस्टर का भी मौत हो चुका था उनका मदर के जैसे. In charge of my aunt and some kind neighbors. एंड कौन चार्ज में था, कौन एडल्ट था घर पे? एक आंट था एंड उसके साथ कुछ काइंड नेबर्स था. माई aunt my aunt was the kindest soul I know, but she was of no help to us. Again, he's saying his aunt was the kindest soul you can know. Like she's a very kind person by soul, but she was no help to them because she was not helping them in any way. She was somewhat of a dwarf and had some trouble with her legs, which made it very difficult to her to move about without any aid. अगेन उनका आंट का पैर पे कुछ दिक्कत था एंड इसीलिए उनको मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. ऑफन टाइम्स शी हैड टू बी लिफ्टेड. अगेन उनका आंट का पैर में इतना ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, कभी कभी उनको लिफ्ट करके मूव करना पड़ता था. आई हैड सिस्टर्स. देयर फैमिलीज, they were married and were away living with their families. Again, इनका जो बहना थी वो लोग मैरिड हो गई थी, यानी कि उन लोग का शादी हो गया था एंड अपने फैमिली के साथ सब खुश रह रहे थे. Cooking our food became a problem with us, especially as our auntie could not, on account of her helplessness, manage the job. We four children went to school and we also cooked our food. Again, ये चार चिल्ड्रन अपने स्कूल भी जाते थे एंड उसके साथ साथ खुद का खाना भी बनाते थे. We could not prepare bread,
So we lived on pulao, which we found to be the easiest dish to prepare, requiring nothing more than mixing rice and mutton. यानी कि वो रोटी नहीं बना सकते थे, इसीलिए सबसे इजीएस्ट डिश जो है वही बनाते थे, दैट इज़ पुलाव, जहाँ पर वो राइस एंड मटन को मिक्स करते थे, राइस एंड मटन मिला के वही बिरयानी टाइप का बनाते थे, राइट, बट नॉट दैट टेस्टी, बिकॉज यू नो दैट राइट, दिस आर किड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस आर नॉट लाइक शेफ्स, लाइक एक्सट्रीम गुड शेफ्स नहीं है, दिस आर लाइक लिटरल किड्स. Being a cashier, my father could not leave his station to come to Satara to see us. Again, as his father was a cashier, he could not leave the job and come to see them. Therefore, he wrote to us to come to Koregaon and spend our summer vacation with him. So, उसका फादर उन लोग को लिखा था कि कोरेगांव आके समर स्पेंड करके जाने के लिए. We children were thoroughly excited over the prospect, especially as none of us had up to that time seen a railway train. Sorry. We children were thoroughly excited over the prospect, especially as none of us had up to that time seen a railway train. अगेन वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उस टाइम तक वो लोग कभी भी रेलवे ट्रेन नहीं देखा था. Great preparations were made. New shirts of English make, bright beige welt caps, new shoes, new silk bordered dhotis were ordered for the journey. अगेन जर्नी के लिए क्या क्या चीज़ मतलब प्रिपरेशन किया गया. न्यू शर्ट, इंग्लिश शर्ट बनाया गया. बेजे वेल्ट कैप्स बनाया गया. न्यू शूज़, न्यू सिल्क बोर्डेड धोतीस, सिल्क का बनाया हुआ धोतीस एंड were ordered for the journey के लिए ऑर्डर किया गया. My father had given us all particulars regarding the journey and had told us to inform him on which day we were starting so that he would send his peon to the railway station to meet us. यानी कि उनका फादर बोल दिया था कि कहाँ क्या रुकना है, कौन सा ट्रेन से जाना है एंड स्टफ्स लाइक दैट. एंड ऑल्सो इन्फॉर्म कर देने के लिए बोला था कि किस दिन वो लोग निकल रहा है, ताकि जिस दिन उतरेगा उसी दिन वो लोग को रेलवे स्टेशन से लेने के लिए पियोन उधर हाजिर हो जाएगा. सो दैट्स वाई ही वॉज टोल्ड टू इन्फॉर्म कि कब वो लोग निकल रहा है घर से. According to this arrangement, myself, my brother, and one of my sister's son left Satara, our aunt remaining in charge of our neighbors who promised to look after her. क्या बोल रहे कि इस अरेंजमेंट के अनुसार बाबा साहेब का भैया एंड उसका दीदी का एक बेटा साथ जाना शुरू किया कोरेगांव की तरफ. एंड जो आंट के बारे में बात करे थे, जो थोड़ा सा डवर्फ था एंड जिसका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो लोग नेबर के भरोसे में मतलब उसको छोड़ के आया गया. ओके. The railway station was 10 miles distant from our place, and a Tonga, one horse carriage, was engaged to take us to the station. एक टोंगा चढ़ के वो रेलवे स्टेशन पहुँचे. We were dressed in new clothing especially made for the occasion, and we left our home full of joy, but amidst the cries of my aunt, who was almost prostrate with grief at our parting. तो हाँ, वो लोग बहुत खुश थे, न्यू क्लोथ्स पहने हुए थे, बहुत घर से निकल रहे इतना दूर जर्नी करने के लिए. दे वर फुल ऑफ जॉय बट amidst the cries of my aunt, who was almost prostrate with the grief at our parting. उसका जो aunt था, जो aunt again the aunt who had problem with her knees and all, she was very like prostrate with grief. She was crying and all because she cannot see these kids for like a few weeks or something. So she was very sad and she was crying.
But although she was crying and this thing, but they were very happy because they were like having a great journey to their father. When we reached the station, my brother bought tickets and gave me and my sister's two son 2 आनाज, सॉरी सिस्टर सन 2 आनाज, ओके 2 सन नहीं। तो यहाँ पर जब स्टेशन में पहुँचे तब सबके लिए एक एक करके टिकट खरीदा गया। एंड जो सबसे बड़े भाई थे यानी कि अंबेडकर जी के जो भाई थे वो सभी को यानी कि अंबेडकर जी को एंड उसका दीदी का बेटा को 2-2 आना करके दिया। आना मतलब होती है 16 आनाज मतलब 1 रुपया होती है, राइट। सो 2 आना मतलब 1/8 रुपीज़, 1/8 रुपीज़ मतलब 12.5 पैसा, राइट। ओके 12.5 पैसा करके दोनों बच्चों के हाथ में दिए भैया, एंड दोनों खुश थे। We at once began our career of righteous living and each ordered a bottle of lemonade at start. Again हाथ में नया नया पैसा आया है, दोनों बच्चा एक कप करके लेमोनेड खरीद लिया जर्नी के बिगिनिंग में ही। After a short while the train whistled in and we boarded it as quickly as we could for the fear of being left behind. पहली बार ट्रेन पे चल रहे थे, सो दे वर वेरी अफ्रेड कि ट्रेन हम लोग को छोड़ के निकल जाएगा। इसीलिए जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा दे लाइक रश्ड इनटू द ट्रेन एज फास्ट एज दे कुड। वी वर टोल्ड टू डी ट्रेन एट मसूर, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फॉर गोरेगांव। अगेन आई डोंट नो इट्स गोरेगांव और गोरेगांव, कहीं गोरेगांव लिखा हुआ है कहीं कोरेगांव लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द एक्चुअल वर्ड, इज इट KOREGAON और इट्स GOREGAON, आई डोंट नो। तो बेसिकली उन लोग को मसूर पे उतरने बोला गया था जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोरेगांव/गोरेगांव जगह के लिए। द ट्रेन अराइव्ड एट मसूर एट अबाउट 5 in the evening, शाम को 5 बजे ट्रेन उतर गया, मैं मसूर पहुंच गया एंड वो लोग उतर गया। वी गॉट डाउन विथ आवर लगेज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन अ फ्यू मिनट्स all the passengers who had got down from the train had gone away to their destinations. जो ट्रेन से जो भी पैसेंजर्स उतरे थे सारे अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, पर वो लोग रुके हुए थे। We 4 children remained on the platform looking out for my father or his servant. वो 4 बच्चा अपने पापा या उसका जो भी नौकर वकर है वो लोग के लिए वेट करते रहा। अगेन यू रिमेंबर उसका पापा बोले थे कि जब वो आएगा जब निकलेगा तब उनको चिट्ठी करने, सो दैट जब वो लोग उतरेगा उस टाइम पे वो लोग को नौकर वोकर को लाइक भेज देगा, राइट। सो वही लोग के लिए वेट कर रहे थे लोग, ये 4 बच्चा। 4 या 3 कहीं पर 3 लगता है कहीं पर 4 लगता है, रुक जाओ। 4 चिल्ड्रन, ओके। दीदी के 2 ही बच्चा जा रहा है, ओके। सो देयर आर लाइक 4 किड्स देयर। कहीं पर हमको लगा था कि दीदी के साथ 1 बच्चा जा रहा है, नहीं, दीदी के 2 ही बच्चा जा रहा है, राइट। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप। बहुत देर वेट किया, कोई आया नहीं। एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। 1 घंटा बीत गया एंड स्टेशन मास्टर वो लोग के पास आके पूछना शुरू किया। ही आस्क्ड फॉर अस फॉर आवर टिकट्स। टिकट लिया कि नहीं लिया पूछा। मीन तुम स्टेशन पे ऐसे खड़े रहोगे तो पूछेगा ही, राइट। We showed them to him. He asked us why we were tarried. We told him that we were bound to go to Goregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up. Again, तो वो पूछा कि इतना वरीड क्यों लग रहे हो, तो लोग बोला कि हम लोग वेट कर रहे हैं
अपने पापा या उसके सर्वेंट के लिए जो हम लोग को कोरेगांव लेके जाएगा. And that we did not know how to reach Koregaon, and वो लोग को भी खुद पता नहीं था, and that's why they were waiting, and they were also like really worried. We were well dressed. We were well dressed children. They were wearing new dresses, so they were really well dressed. From our dresses or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Again, यहाँ पर आपको पहले काउंटर होगा अनटचेबिलिटी का, सेंसस का, चीज़ का, राइट, लाइक प्रैक्टिस का. तो as they were wearing new clothes and as they were not matching the stereotypical untouchability types, so ऐसे देख के कोई समझ नहीं पाएगा they belong from the untouchable caste, or they had the name of the untouchable caste, right? Like, indeed, the station master was quite sure that we were Brahmin children and were extremely touched at the plight in which he found us. This is so fucking uh, dehumanizing. Like, he is only touched by their problem because he thinks they are Brahmin or upper caste children. Bro, like, people can be so bad, man. Like, really sad. Yeah. As usual among the Hindus, the station master asked who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Maharaj. Maharaj is one of the communities which are treated as untouchables in the Bombay presidency. Okay, तो स्टेशन मास्टर पूछा कि कौन है, तुम लोग कौन हो, एंड एक मोमेंट भी वेट नहीं करके अम्बेडकर जी बोल के उठे, दे आर महाराज. महाराज इज़ लाइक अ कम्युनिटी जो जिसको अनटचेबल जैसे ट्रीट किया जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर. विच ही वॉज टर्न, हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. He was stunned. अचानक चौंक गए वो, सोचे कि I was feeling empathetic for this pupil, these children who were worried about their father not coming. I was worried because they are Brahmin, but they are not Brahmin, they are untouchable people. So I am not worried, I am repulsed by them. Like, he had this type of feeling, right? So bad, na? Like, generally, as a person who belong from a general caste, you can say, uh, I never felt this, and even the people I mixed with, this whole untouchability thing मेरे कभी नज़र पे नहीं आया. एंड पीपल माइट आर्ग्यू कि अभी चीज़ें बेटर हो चुकी है, विच pretty much is possible to be better because again यहाँ पर 2000s के पहले की बात हो रही है. बट अगेन तुम न्यूज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं दलित वुमेन, दलित मैन को प्रेस करने का, हरास करने का न्यूज़ सामने आ ही जाती है. एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें उतना भी ज़्यादा बेटर नहीं हुआ है जितना हम लोग सोचते हैं. बट ओके, लेट्स कंटिन्यू. हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. Again, वो लोग देख सकता था कि सडनली उसका फेस एम्पैथेटिक से सडनली रिपल्सन टाइप का हो गया. वो लोग वो रिपल्स्ड हो गया वो चारों बच्चों से बिकॉज दे वर महार्स एंड दे वर नॉट ब्राह्मण्स. As soon as he heard my reply, he went to his room and we stood where we were. जब he heard that they were Mahars, suddenly उसके पास से, उस चारों बच्चों के पास से वो भाग के अपने रूम पे घुस गया, अपने जो कैबिन है वहाँ पर घुस गया. एंड चारों बच्चा जिधर खड़ा था उधर ही खड़ा रहा. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. बात करने के बाद 15 से 20 मिनट और भी क्रॉस हो गया एंड द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग. द
सन सेट होने का टाइम हो गया। शाम का टाइम था 5 बजे। अगेन कुछ देर इसके पहले भी वेट किया था, ऑलमोस्ट 6 बज गया था, सो सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। द फादर हैड नॉट टर्नड अप, नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस। अगेन इसका फादर नहीं आया था, उसका सर्वेंट नहीं आया था, एंड जो स्टेशन मास्टर इतना लाइक एम्पैथी के साथ पूछ रहा था कि लोग को क्या दिक्कत हो रही है, वो भी छोड़ के चला गया। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. Again, आधा घंटा बाद स्टेशन मास्टर वो लोग के पास आया एंड पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो। We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Goregaon, and if it is not very far, we would like to start straightway. एंड इफ़ इट इज़ नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे। मतलब बोल रहे कि वो स्टेशन मास्टर को रिप्लाई किया, हम लोग गोरेगांव जाना चाहते हैं, एंड अगर कोई कार्ट मिलेगा, कोई टोंगा वोंगा मिलेगा, तो उससे हम लोग जाने पसंद करेंगे। एंड अगर आप हायर करके देंगे तो, एंड ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। There were many bullock cans plying for hire. Again बहुत सारा कार्ट खड़ा हुआ था, बुलक कार्ट खड़ा हुआ था, कैंस लिखा हुआ है, मतलब बुल से खींचा जाने वाला कार्ट खड़ा हुआ था जो कि हायर के लिए खड़ा हुआ था, ऑटो जैसे, राइट। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महाराज, okay, but my reply to the station master that we were Maharaj had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. As Ambekar ji station master को बोला कि they were Maharaj, and ये बात सारे जो कार्टमैन है सारे के बीच में घूम चुका था, एंड कोई भी अपने आप को पॉल्यूटेड करके लोग को लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. Again ये लोग बोला कि हम लोग 2 गुना पैसा दे सकते हैं, पर फिर भी बोला कि पैसा नहीं चाहिए, हम लोग पॉल्यूटेड नहीं होना चाहते। लाइक really religious belief can really demoralize people, dehumanize people, stop people from seeing other people as human beings, right? And सिर्फ religion ही नहीं है, but religion is one of the most egregious things that does in a society, and still people stand there to protect or defend it. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. जो स्टेशन मास्टर उसके बिहाफ पे नेगोशिएट कर रहा था कार्टमैन के साथ, उसको भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा वो लोग को, या वो बच्चे लोग को क्या बोलेगा कि कैसे वो लोग जाएगा। Suddenly a thought seemed to have entered in his head, and he asked, can you drive the can? Feeling that he was finding out a solution of our difficulty, we shouted, yes we can, yes we can. Suddenly स्टेशन मास्टर के दिमाग से एक चीज़ आया, एंड वो बच्चों को पूछा कि अगर तुम लोग को कैन दिया जाए, तुम लोग चला सकते हो क्या? एंड बच्चों लोग को लगा, एंड अम्बेडकर जी, उसका भाई, एंड और 2 जो बच्चे था, उसको लगा कि ये तो हमारी प्रॉब्लम है, एंड हमारे प्रॉब्लम के लिए स्टेशन मास्टर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। सो दे शाउटेड yes we can, so that station master turned off ना हो जाए basically. With that answer, he went and proposed on our behalf that we are to pay the cartman double the fare and drive the cart, and he should walk on foot along with the cart on our journey. तो बेसिकली ये नेगोशिएशन हुआ कि नॉट ओनली उसको डबल फेयर देना पड़ेगा बच्चों को,
उसके साथ साथ वही अपने आप को कार्ट चलाना पड़ेगा, लाइक बच्चों लोग को कार्ट खुद से चलाना पड़ेगा। एंड जो कार्ट पिन है उस टाइम पे कार्ट पे नहीं चढ़ सकते जब बच्चों लोग चला रही है, चढ़ा हुआ है, बिकॉज ही वुड गेट कोट एंड कोट पोल्यूटेड एंड ही वुड वॉक बिहाइंड व्हेन द बच्चों लोग जैसे सामने आगे बढ़ जाएगा वैसे वो पीछे पीछे लाइक चलते चलते आएगा। दैट्स द नेगोशिएशन डील बेसिकली। One cartman agreed as it gave him an opportunity to earn his fare and also saved him from getting polluted. एक कार्टमैन एग्री कर गया क्योंकि उसको पैसे भी मिल रहा है एंड उसके साथ साथ कोट एंड कोट पोल्यूटेड भी नहीं होने पड़ेगा उसको, बेसिकली दोनों फ़ायदा है उसको, इसीलिए वो एग्री कर गया। इट वॉज अबाउट 6:30 PM, 5 बजे लोग उतरे थे एंड 1.5 घंटा हो चुका था। When we were ready to start, but we were anxious not to leave the station until we were assured that we would reach Goregaon before it was dark. तो अम्बेडकर जी यहाँ पर बोल रहे हैं 6:30 गया था एंड वो लोग रेडी हो गया था स्टेशन से निकलने के लिए, पर ऑल्सो वो लोग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, एंक्शियस था, ताकि सो दैट दे बिकम कन्फर्म कि डार्क होने के पहले, अंधेरा होने के पहले ही वो लोग गोरेगांव पहुँच जाए। We therefore questioned the cartman as to the distance and the time he would take to reach Goregaon. He assured that it would be not more than 3 hours. Again, कार्टमैन को लोग पूछा कि कितना देर लग सकता है ये कार्ट पे। कार्टमैन बोला 3 घंटे से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। Believing in his word, we put our luggage in the can, thanked the station master and got into the cart. कार्टमैन का बात बिलीव करके वो लोग कार्ट पे अपने लगेज रखा, खुद चढ़ गया एंड निकल पड़ा। And also thanked the station master because he negotiated with the cartman and also asked them about the problem and stuff like that, right? One of us took the reins and the car started with the man walking by our side. बच्चों में कोई एक वो जो जिसको लगाम बोलते हैं बंगाली में, जिसको लाइक द होल्डिंग थिंग, द थिंग दैट यू होल्ड टू लाइक पुल एंड द बुल्स स्लैश हुएवर इज पुलिंग द कार्ट विल रन फास्टर। वो लोग एक बच्चा वो रस्सी पकड़ा एंड जो कार्टमैन था वो पास में चलते चलते निकल गया along with the cart. Not very far from the station there flowed a river. Not very far from the station there flowed a river. It was quite dry except at places where there were small pools of water. बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था वो लोग देखा कि एक रिवर फ्लो कर रहा है। It was dry except at places where there were small pools of water. रिवर ऐसे ड्राई था बट कहीं कहीं जगह में छोटा छोटा पडल बन गया था पानी का। The owner of the cart proposed that we should halt there and have our meal as we might not get any water on our way. The owner of the cart proposed that we should halt there and have our meal. ओनर प्रपोज किया कि वहाँ पर रुक के उन लोग को मील ले लेनी चाहिए, खा लेनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद उन लोग को कहीं पे पानी नहीं मिलेगा। We agreed. They agreed. He asked us to give a part of his fare to enable him to go to the village and have his meal. तो जो कार्टमैन था वो बोला कि तुम मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो एंड वो गांव पे जाके कुछ खाना वाना लेके आएगा so that he can sit there and eat with them. My brother gave him some money and he left promising to return soon. तो उसका जो बड़े भाई था वो पैसा दे दिया एंड वो निकल गया, जो कार्टमैन था वो निकल गया एंड प्रॉमिस किया कि जल्दी आ जाएंगे। We were very hungry and were glad to had an opportunity and glad to have had an opportunity to have a bite. We were very hungry and were glad to have had an opportunity. तो वो लोग बहुत ज़्यादा भूखा था एंड इसलिए बहुत ज़्यादा खुश था वो लोग कि कुछ खाने के लिए मिल रहा है। My aunt had pressed our neighbors women folk into service
and had got some preparation for us to take our way. We opened we opened tiffin baskets and started eating. तो वो लोग टिफिन बास्केट खोल के खाना शुरू किया. वी नीडेड वाटर टू वॉश थिंग्स डाउन. पानी चाहिए था चीज़ें धोने के लिए, हाथ धोने के लिए बेसिकली खाने के बाद. One of us went to the pool of water in the river basin nearby, but the water was really no water. The water really was no water. It was thick mud and urine and excreta of cows and buffaloes and other cattle who went to the pool for drinking. तो जो पडल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि रिवर सूख गया पर थोड़ा थोड़ा पडल्स ऑफ वाटर है, पर वो एक्चुअली पानी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मड है. वहाँ पे काऊ का गोबर है, यूरिन है एंड एक्सक्रीटा है एंड सारे मिल के एकदम खिचड़ी टाइप का बन चुका है. वो क्लीन वाटर नहीं है हाथ धोने के लिए. आई मीन इट्स नॉट इवन लाइक वाटर दैट यू कुड यूज टू वॉश योर हैंड. क्लीन की भी ज़रूरत ही है. दैट इज़ नॉट अ वाटर एट ऑल. In fact, the water was not intended for human use. Again, वो पानी कोई human use नहीं कर सकता था. At any rate, the stink of the water was so strong we could not drink it. कैसे कर कभी हाथ धो भी ले तो भी इतना ज़्यादा बदबू मार रहा था कि वो पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था. We had therefore to close our meal before we were satisfied and wait for the arrival of the cartman. तो इसीलिए वो लोग को हाथ लाइक टिफ़िन बंद करना पड़ा बिकॉज वो लोग को प्यास लगा था एंड कार्टमैन पहुंचने तक का वो लोग को इंतज़ार करना पड़ा. He did not come for a long time and all that we could do was to look for him in all directions. बहुत देर तक वो नहीं आया एंड बच्चों लोग यही कर सकता था कि उसके लिए वेट कर सकता था. बट दैट्स प्रीटी मच इट दे कुड डू. दे कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स. ही दे वर वेटिंग, दे वर लुकिंग फॉर हिम इन ऑल डायरेक्शंस कि कब आ रहा है, किधर से आ रहा है, राइट. अल्टीमेटली ही केम एंड वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी. फॉर सम फोर और लाइव फॉर सम 4 or 5 meters. ये बुक पे बहुत ज़्यादा लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स है ब्रो. फॉर सम 4 or 5 miles we drove the cart and he walked on foot. Same thing, they were driving the cart and the person was walking on foot. 4-5 माइल तक वो लोग आगे बढ़ा. Then suddenly he jumped into then suddenly he jumped with the cart and took the reins from our hand. We thought this would be a rather strange conduct on the part of the man who had refused to let the cart on hire for fear of pollution, to have set aside all his religious sculptures, scruples, fuck, scruples, and have considered to sit with us in the same cart, but we dared not to ask him any questions at this point. वी थॉट दिस वुड बी अ स्ट्रेंज कॉन्डक्ट. मतलब जो कार्टमैन था वो चलते चलते क्या किया, बोला कि बच्चों तुम लोग हट जाओ, हम ही चलाने शुरू करते हैं. एंड ही बेसिकली गॉड ऑन द कार्ट एंड टुक द रेंस. रस्सी अपने हाथ पे लिया एंड चलाना शुरू किया. बच्चों को लगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, हम लोग को उठने ही नहीं दे रहा था पल्यूटेड हो जाने के डर से, बट अभी खुद ये सारे रिलीजियस चीज़ें हटा के खुद चलाने शुरू कर रहे हैं. क्या बात है, क्या सीन है. बट कोई क्वेश्चन पूछने का साहस नहीं किया बिकॉज कुछ पूछता तो अगेन फिर से कुछ दिक्कत होता, कुछ उतार देता या समथिंग लाइक दैट. इसीलिए कुछ पूछने का साहस नहीं किया.
I mean, you can understand how fucked the situation was. I mean, there is no other way of explaining this. We were anxious to reach कोरेगांव our destination as quickly as possible. Again, बच्चे हैं, रात हो चुका था, एक अनजान बंदे के साथ जा रहा था जो लोग को छूने तक नहीं चाहता है. So they were really anxious about कितना जल्दी वो लोग पहुँचेगा. And for some time we were interested in the movement of the cart only. कुछ देर कार्ट को ही देखते रहा, चक्का घूम रहा है, जो पुल है वो आगे बढ़ रहा है, एंड वही देखते रहा. But soon there was darkness all around us. There were no street lights to relieve the darkness. कोई street light नहीं था. There were no men or women or even cattle passing by to make us feel that we were in their midst. मतलब कोई कोई जा नहीं रहा था, कोई आ नहीं रहा था, कोई इंसान नहीं था, कोई कैटल नहीं था, सो दैट वो लोग को लगे कि हाँ वही कैटल या इंसान के बीच से वो लोग जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं था. वो लोग सुनसान रास्ते से जा रहा था, बहुत रात हो गया था. इन स्पाइट ऑफ दैट, like they were going to the destination, and that's the reason they were very anxious. They were like fearing for their life. We became fearful of the loneliness which surrounded us. Our anxiety was growing. वो लोग अपने loneliness के वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था, anxiety बढ़ रहा था. We mastered all the courage we possessed. We mastered all the courage we possessed. सारे जो जो शरीर पे जितना भी courage था वो लोग एक जगह में किया. We traveled far from Masur. मतलब जिस स्टेशन पे लोग उतरा वहाँ से काफ़ी काफ़ी दूर वो लोग ट्रैवल कर चुका था. इट वॉज मोर देन 3 hours. 3 घंटे से काफ़ी ज़्यादा पार हो चुका था. बट देयर वॉज नो शाइन ऑफ कोरेगांव. पर कोरेगांव का कोई साइन ही नहीं था. वो 3 घंटा बोला था, 3 घंटे से ज़्यादा पार हो चुका था, मसूर से भी काफ़ी दूर आ चुका था, बट कोरेगांव का भी कोई साइन नहीं है. जायज़ है, बच्चे हैं, एंग्सियस होना जायज़ है. बच्चे नहीं भी हो तब भी एंग्सियस होना जायज़ है. There arose a strange thought within us. We suspected that the cartman intended treachery and that he was taking us to some lonely spot to kill us. तो लोग को like credibly enough, like possibly enough, लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि जो कार्टमैन इतना देर तक पॉल्यूटेड होने के डर में चढ़ नहीं रहा था, वही अचानक चढ़ के रस्सी अपने हाथ पे ले लिया. एंड इतना रात है, रुक नहीं रहा है कहीं भी, सीधा चलते जा रहा है. like nobody is seeing them, and they were thinking possibly the cartman would take them to some lonely place and kill them, and that's why they were afraid of their life. We had a lot of gold ornaments on us, and that had helped to strengthen our suspicion. अगेन वो लोग के हाथ पे गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहना हुआ था वो लोग, तो वो लोग को लाइक नॉर्मली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज दे वर थिंकिंग वो लोग को मार के वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स कार्ट में ले सकते हैं. We started asking him how far Koregaon was. We were so late in reaching it. He kept on saying it is not very far. We shall soon reach it. He kept on saying it was not very far. We shall soon reach it. तो बच्चे लोग पूछते रहा कि कोरेगांव कितना दूर है, एंड जो कार्टमैन है वो भी बोलते रहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 10 बज रहा है, एंड तुम लोग अभी बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. इट वॉज अबाउट 10 at night when, finding that there was no trace of Koregaon, which children started crying and abusing the cartman. तो रात 10 बज रहा था, एंड कोरेगांव का कोई नामो निशान नहीं था, इसीलिए जो बच्चों था सारे रोने लग गया एंड कार्टमैन को गालियाँ देने लग गया. आवर lamentations and wailings continued for long. बच्चे लोग बहुत देर से रोना एंड गाली देना शुरू किया. The cartman made no reply. कोई रिप्लाई नहीं दिया.
Suddenly we saw a light burning at some distance. The cartman said, "Do you see that light? That is a light of the toll collector." अगेन कार्टून बोला कि दूर पे लाइट दिख रही है, वो लाइट जो है वो एक टोल कलेक्टर का लाइट है. वी विल रेस्ट देयर फॉर द नाइट. मतलब वहाँ पर हम लोग रात को रेस्ट करेंगे एंड रात को हम लोग कोरेगांव नहीं पहुँच पाएंगे. वी फेल्ट सम रिलीफ एंड स्टॉप क्राइंग. बच्चों लोग को लगा कि हाँ भाई कोई और सेकंड बंदा है एंड वो लोग रोना धोना बंद किया एंड एक सेंस ऑफ रिलीफ फील है वो लोग को. द लाइट वॉज डिस्टेंट बट वी कुड नेवर सीम टू रीच इट. बहुत दूर से लाइट दिख रहा था, एक ही लाइट है पूरे जगह पे तो बहुत दूर से दिख रहा था, बट दे वर रीचिंग इट. बट बच्चों को लग रहा था कि हम लोग पहुँच ही नहीं रहे हैं, बहुत दूर है. जितना ही जा रहे हैं उतना ही लग रहा है कि और दूर है, लाइक राइट. इट टूक अस 2 hours टू रीच द टोल कलेक्टर्स हट. जब से वो लोग लाइट देखा वहाँ से 2 घंटा समय लग गया वो टोल कलेक्टर का हट तक पहुँचने के लिए. द इंटरवल increased our anxiety and we kept on asking the cartman all sorts of questions as to why there was delay in reaching the place, whether we were going on the same road, etc. अगेन जैसे देरी हो रहा था वैसे बच्चों लोग कार्टमैन को पूछना शुरू किया, क्या वही रास्ते में जा रहे जो सबसे नियरेस्ट है, इतना देर क्यों हो रहा है. एंड लाइक दे आर वेरी एंक्सियस, राइट. दे वर वेयरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स. दे वर कंसिडर लेसर इन द सोसाइटी एंड उन लोग को मार भी देगा तो कोई ज़्यादा केयर करने के लिए नहीं है. दे वर रियली एंक्सियस, दे वर किड्स एंड दे वर आस्किंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. Ultimately, by midnight, the cart reached the toll collector's hut. मिडनाइट तक टोल कलेक्टर का हट पे वो कार्ट पहुंच गया. इट वॉज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ अ हिल बट ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल. ओके, इट वॉज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ अ हिल बट ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल. मतलब वो लोग जिस साइड ऑफ द हिल पे था उसका ऑपोजिट साइड पे टोल कलेक्टर का हट था, इसीलिए वो लोग को पूरा एकदम घूम के जाना पड़ा आई थिंक. When we arrived, we saw a large number of Balakkars there, all resting for the night. जब टोल कलेक्टर का हट पे वो लोग रुका तब देखा कि और भी काफ़ी सारा कार्स था जो जिसका लोग उसके अंदर वेट कर रहा था, उस टोल कलेक्टर के हट के अंदर वेट कर रहा था रेंट देके. We were extremely hungry and wanted to very much eat. बच्चे लोग बहुत ज़्यादा भूखा था एंड कुछ खाने चाहता था बेसिकली. But again there was the question of water. So we asked our driver whether it is possible to get water. तो वो लोग बच्चे लोग ड्राइवर को पूछा कि थोड़ा थोड़ा पानी वानी मिल सकता है क्या. He warned us that the toll collector was a Hindu and that there was no possibility of getting water if we spoke the truth and said that we were Maharas. He said, "You say you are Mohammedans and try your luck." तो बेसिकली वो बोला कि टोल कलेक्टर को, तुम अगर लोअर कास्ट हिंदू हो तो मतलब लोअर कास्ट हो तो तुमको पानी तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता है बिकॉज दे वर अपर कास्ट हिंदू, राइट. एंड अगर इसीलिए तुमको बोलना पड़ेगा कि तुम लोग मोहम्मदियंस हो. मोहम्मदियंस मतलब मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स हो बोल के तुम ट्राई करो, पानी मिल भी सकता है. बट अगर तुम बोलोगे कि लोअर कास्ट हिंदूज हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पानी. So fucking cruel, right? But yeah, on his advice, I went to the toll collector's hut and asked him if he could give us some water. Who are you? He inquired. I replied that we were Musalmanas. I conversed with him in Urdu, which I knew very well, so as to leave no doubt that I was a real Musalman. Again, uh, he said that he was a Musalman, yani ki he was a Muslim, and I mean, when he asked for water, the first thing he asked that, "Who are you? Which type of people are you?" He said he was a Muslim, and
To convince him that he was a Muslim, he started conversing in Urdu, जो उसको बहुत अच्छा से पता था. Again, this was straight about Baba Sahib. He knew a lot of languages, and I'm really jealous of it. By the way, I want to learn a lot of languages, but like I don't really have the resources to learn it. I know. It's ridiculous to say I a semi-rich guy. I mean, say, coming from a semi-rich family, right? Uh, Saying that I don't have the resources. While the person who comes from such a hardship while doing political activism was like able to learn so many languages, but I'm not. That's fucking sad. But also, I genuinely don't have the like resources and time to learn. I trust me. I do, but I don't. But the trick did not work, as his reply was very curt. Who has kept water for you? There is water on the hill if you want to go and get. I have none. बोला कि तुम्हारे लिए पानी है, कौन बोला है? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है. पहाड़ के ऊपर पे पानी है, अगर मन करता है तो ऊपर जाओ और लेके आओ. I don't know what my brother felt. All that he did was to tell us to lie down. तो उसका भाई क्या फील कर रहा था दिल पे उसको पता नहीं है, बाबा साहब को पता नहीं है. बट सिर्फ उसका भाई बोलते रहा कि बच्चों तुम लोग सो जाओ, अभी सो जाओ. The bullocks had been unyoked and the cart was placed sloping down on the ground. जो यक्स था वो लोग को बुलक से अलग किया गया, एंड जो कार्ट को था वो मतलब स्लैंटिंग पोजीशन पे रख दिया गया. We spread our beds on the bottom planks inside the cart and laid down our bodies to rest. Again, cart का नीचे वो लोग चादर बिछे लिया and they just laid down there. Now that we had come to a Now that we had come to a place of safety, we did not mind what happened. जब वो लोग सेफ्टी में फाइनली पहुँच ही गया, वो लोग को अब फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्या हुआ था, कितना देर वो लोग को वेट करना पड़ा, एंड कितना सारा कार्ट मैंने उसको रिजेक्ट किया. But our minds could not help turning to the latest event. There was a plenty of food with us. The hunger was burning within us. With all this, we were to sleep without food. मतलब वो लोग के पास खाना था पर एज पानी नहीं था हाथ धोने के लिए, वो लोग खाना नहीं खा पा रहा था. एंड they had food but in the same place they were not able to eat, and वही भूख पेट पे वो लोग को सोना, like they were forced to sleep. There was the there was because we That was because we could get no water, and we could get no water because we were untouchables. Again, वो लोग खा नहीं पा रहा था बिकॉज वो लोग को पानी नहीं मिल सकता है, एंड वो लोग पानी नहीं मिल सकता है बिकॉज वो लोग अनटचेबल्स हैं. Such was the last thought that entered our mind. I said we had come to a place of safety. Evidently, my elder brother had his misgivings. He said it was not wise for all four of us to go to sleep. Again, वो लोग उसका भैया बोला कि चार जन को एक साथ सोने नहीं जाना चाहिए, दो को सोने जाना चाहिए एंड दो को उठ के रहना चाहिए. Anything might happen. He suggested that at one time two should go to sleep and two should keep a watch. Again, same thing. दो जन को सोने जाना चाहिए एंड दो जन को उठ के रहना चाहिए. So we spent the night at the foot of the hill. तो उस नाइट वो लोग foot of the hill ही सो गया. Early at 5 in the morning, our cartman came and suggested. Early, early at 5 in the morning, our cartman came and suggested that we should start for Koregaon. तो सुबह का 5 बजे, भोर का 5 बजे उसका कार्टमैन आया एंड बोला कि अभी निकलना चाहिए कोरेगांव की तरफ. We flatly refused. We told him that we would not move until 8 o'clock.
वो लोग बोला कि नहीं नहीं, 5 बजे हम लोग नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा 8 बजने दो, थोड़ा सा लाइक सूरज वूरज निकलने दो, उसके बाद हम लोग निकलेंगे. वी डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस अगेन. ये जो कार्टमैन था उसको बहुत ज़्यादा स्केची लग रहा था, एंड इन द सेम प्लेस दे वर नॉट रियली ट्रस्टिंग दिस पर्सन. सो वो लोग बोला कि थोड़ा सूरज निकलने दो, थोड़ा आदमी जब रास्ते पे आ जाएगा, कैटल रास्ते पे आ जाएगा, उसी टाइम हम लोग निकलेंगे. सो वी लेफ्ट 8 एंड रीच्ड कोरेगांव एट 11. तो 8 बजे वो लोग निकला वही फुट हिल से, एंड 11 बजे वो लोग अपने कोरेगांव पे घर पे पहुंच गया. माई फादर वॉज सरप्राइज टू सी अस एंड सेड दैट वी हैड रिसीव्ड नो intimation of our coming. That he had received no intimation of our coming. My father was surprised to see us and said that he had received no intimation of our coming. We protested that we had given intimation. He denied the fact. Subsequently, it was discovered that the fault was of my father's servant. He had not received our letters. He had received our letters but failed to give it to my father. मतलब जब भी वो लोग पहुँचा, उसका फादर बोला कि तुम लोग कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं भेजा. रिमेंबर द चिट्ठी दैट आई टॉक्ड अबाउट, जो उसके फादर भेजने बोला था ताकि वो अपने सर्वेंट को या खुद जा सके वो लोग को लेने के लिए स्टेशन से. सो ही टॉक कि हमको कोई चिट्ठी भी तो नहीं मिला. एंड दे प्रोटेस्टेड कि क्या बोल रहे हैं, हम लोग चिट्ठी भेजे. एंड उसका पापा बोला कि नहीं, हमको तो चिट्ठी नहीं मिला. एंड फाइनली दे फाउंड आउट दैट the father servant did not give the chitti to the dad at all. For fuck's sake, bro. And that's why they had to go through all those shit, man. Like, can you imagine going through all this shit as a children? This incident has a very important place in my life. I was a boy of 9 when it happened. Again, I did not know he was so young back then. 9 साल उम्र में इतना कुछ, like, understandable. But it has left an indelible impression on my mind. But it has left an indelible impression on my mind. Before this incident occurred, I knew I was an untouchable, and that untouchables were subjected to certain indignities and discriminations. For instance, I knew that in school I could not sit in the midst of my class students according to my rank, but that I was to sit in the corner by myself. मतलब बाबा साहब इधर बोल रहे, उनको पता था कि अनटचेबिलिटी कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है इंडिया पे. ही न्यू दैट एंड ही कुड नॉट सीट बिटवीन द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज क्लास रैंक. ही हैड टू सिट अलग से एक कॉर्नर पे, उसको पीछे बैठना पड़ता था, एंड खुद का मैट लेके आना पड़ता था. आई थिंक दैट्स व्हाट ही सेज हियर. I knew that in the school I was to have a separate piece of gunny cloth for me to squat on in the class, or the servant employed to clean the school was not to touch the gunny cloth used by me. Again, जो क्लॉथ के ऊपर वो खुद बैठते थे वो सर्वेंट लोग नहीं टच करेगा. एंड ही हैड टू लाइक टेक इट बैक टू होम एवरी डे एंड लाइक क्लीन इट. Basically, he was saying this, that he knew that this type of untouchability existed back then, but he did not know that लोग को पानी पीने तक नहीं देगा या समथिंग लाइक दैट. सो इतना एक सीवियर फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी जब वो फेस किया, he was really sad about it, and it really hurt him as he was just a child of 9 years old. I mean, he did not think, he can't even like think that society and life could be so cruel because of religious practices. बट या आज के लिए इतना ही रहता है. चैप्टर 1 तक हम लोग पढ़े. मैं आज के लिए चलता हूँ. बाय बाय फॉर टुडे. हम लोग एपिसोड 2 पे चैप्टर 2 से एंड तक पढ़ने का कोशिश करेंगे. तो